friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs very easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच इट टिल एंड. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2021? वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2021 का थीम क्या है? सो हियर आर द ऑप्शंस. हैंडल विथ केयर, यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटीमाइक्रोबियल्स. Option B, spread awareness, stop resistance. Option C, change can't wait, our time with antibiotics is running out. Option D, seek advice from a qualified healthcare professional before taking antibiotics. So here the correct answer is answer number B, the 2021 theme, spread awareness, stop resistance, calls on One Health stakeholders, policy makers, healthcare providers and the general public to be an antimicrobial resistance awareness champions. तो इसका क्या थीम था? इसका थीम था ऑप्शन बी, spread awareness, stop resistance. Okay. So now next question, and here the next question is, who has been named the Goodwill Ambassador for the United Nations World Food Program? UN-WFP के Goodwill Ambassador का नाम किसे दिया गया है? So here are the options. David Beckham, Ayushman Khurrana, Mukundakam Sarma, Daniel Brühl, M. Netra. So here the correct answer is option D, M. Netra. Daniel Brühl. Spanish-German actor Daniel Brühl has been named the Goodwill Ambassador for the United Nations World Food Program UN-WFP. Spanish-German actor Daniel Brühl को नाम दिया गया है Goodwill Ambassador United Nations World Food Program के लिए. Okay. So now next question, and here the next question is, who has been appointed as the Director General of Narcotics Central Control Bureau NCB के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? सो हियर आर द ऑप्शन. सत्यनारायण प्रधान, कुलदीप सिंह, गुरबीर पाल सिंह, प्रदीप चंद्रन नायर, सुबोध कुमार जायसवाल. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सत्यनारायण प्रधान. Satyanarayan Pradhan has been appointed as the Director General DG of Narcotics Central Bureau on a deputation till the date of his superannuation on 31st August 2024 or until further orders. सत्यनारायण प्रधान को ही बनाया गया है डायरेक्टर जनरल एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का. 31 अगस्त 2024 को इनकी डिप्यूटेशन डेट है सुपरएनुएशन के लिए. कुछ भी ऑर्डर आने से तक यही डेट अभी तक कंफर्म है. डायरेक्टर जनरल बनाया जाएगा एनसीबी का किसी सत्यनारायण प्रधान को. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Fourth Scorpene submarine of the project 75-yard 11878 has been delivered to the Indian Navy, which will be commissioned as INS Dash. तो ये किसके द्वारा कमीशन किया जाएगा? सो हियर आर द ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज वगीर, ऑप्शन बी कलवारी, ऑप्शन सी करंज, ऑप्शन डी खांदेरी, ऑप्शन ई वेला. So here the correct answer is option number E, Vela. Fourth Scorpene submarine of the project 75-yard 11878 was delivered to the Indian Navy, which will be commissioned as the INS Vela. फोर्थ स्कॉर्पिन सबमरीन प्रोजेक्ट 75-yard 11878 का डिलीवर किया जाएगा इंडियन नेवी की तरफ से, जिसको कमीशन कौन देंगे? INS वेला, इंडियन नेवल शिप वेला. So now next question, and here the next question is, Bhadrachalam has recently added as a destination in the IRCTC's Ramayana circuit train list. Where is it located?
IRCTC के रामायण सर्किट ट्रेन लिस्ट में भद्राचलम को अभी ही ऐड किया गया है एज अ डेस्टिनेशन। तो ये भद्राचलम ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो हेयर आर द ऑप्शंस एंड हेयर द 5 स्टेट्स नेम इज गिवन। ऑप्शन ए इज तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ई केरला। So here the correct answer is Bhadrachalam in Telangana, added as a destination in the IRCTC's Ramayana circuit train. Bhadrachalam is home to Sri Sita Ramachandra Swami Temple. भाद्रचलम तेलंगाना में IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में ऐड हुआ है, लिस्ट में ऐड हुआ है, और ये श्री सीता रामाचंद्र स्वामी टेम्पल का घर है। तो ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना में सिचुएटेड है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which edition of Indo-Thai CORPAT between the Indian Navy and the Royal Thai Navy is being conducted from 12-14 November 2021? 12 से 14 नवंबर 2021 में किस एडिशन इंडो थाई कॉर्पेट के किस एडिशन को कंडक्ट किया जा रहा है? सो हेयर आर द ऑप्शंस 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd. So here the correct answer is option D, 32nd. The 32nd Indo-Thai CORPAT between the Indian Navy and the Royal Thai Navy is being conducted from 12 to 14 November 2021. 32 Indo-Thai CORPAT इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा 12 से 14 नवंबर 2021 के बीच में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नए सेक्रेटरी जनरल कौन है? सो हेयर आर द ऑप्शंस PPK, रामचार्योलू, देश दीपक वर्मा, मुख्तर अब्बास नकवी, V. लक्ष्मीकांता राव, PC मोदी. So here the correct answer is option E, PC Modi, a former chairman of the Central Board of Direct Taxes CBDT, will be the new Secretary General of the Upper House of Parliament. Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu has signed an order to this effect. PC मोदी एक फॉर्मर चेयरमैन है CBDT के, तो ये बन रहे न्यू सेक्रेटरी जनरल अपर हाउस पार्लियामेंट के, और राज्यसभा चेयरमैन M. वेंकैया नायडू ने इस ऑर्डर को साइन किया है। So now next question and the next question is a book titled Unshackling India, Hard Truths and Clear Choices for Economic Revival authored by। एक बुक है जिसका नाम है Unshackling India, Hard Truths and Clear Choices for Economics Revival। इस बुक का ऑथर किसने किया है? सो here are the options प्रदीप मैगजीन एंड सुधा मूर्ति, त्रिपुर दामन सिंह एंड अदील हुसैन, भास्कर चट्टोपाध्याय एंड अमित रंजन, अजय चिब्बर एंड सलमान अनिश सोज, Chidanand Rajghatta and Subha Srinivasan. So here the correct answer is option number D, a book titled Unshackling India, Hard Truths and Clear Choices for Economics Revival, authored by Ajay Chibbar and Salman Anish Soj। अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज ने इस बुक को ऑथर किया है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the retail inflation measured by the consumer price index CPI slightly rose to -% in October। रिटेल इन्फ्लेशन मेज़र CPI की तरफ से नापा गया है, ये हल्का सा बढ़ा है अक्टूबर मंथ में, तो कितना परसेंट बढ़ा है ये? सो हेयर आर द ऑप्शंस 4.48, 5.48, 6.48, 7.48, 8.48। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4.48। तो इसकी बढ़ोतरी बस 4.48% ही हुई है। The retail inflation measured by the consumer price index CPI slightly rose to 4.48% in October। So now next question and the next question is which country army chief was conferred with the honorary rank of General of the Indian Army by President रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट की तरफ से किसे आर्मी चीफ के लिए ऑनर किया गया जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी? सो हेयर आर द ऑप्शंस म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। इन कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशन दैट स्टार्टेड इन 1950, 1950 में स्टार्ट हुए एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा को ऑनररी रैंक जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी का अवार्ड मिल रहा है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel for getting more informative videos regularly.
So thank you and have a nice day ahead.